कैसा था मेरा फर्स्ट ईयर? Hello everyone, this is Jasmine Kaur and welcome to my channel. Well, I am Jasmine Kaur and I am currently doing my MBBS from IGMC Shimla and my first year is finally over. My second year classes are going to start from 16th December. So, कैसा था मेरा फर्स्ट ईयर? It was really a roller coaster ride. बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्ट्रेसफुल. So, इसकी शुरुआत मतलब बहुत ही मज़ेदार हुई थी. हमारे पहले था फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स में अभी कुछ पढ़ना नहीं होता था एंड इट वाज 1 month लॉन्ग. तो फाउंडेशन कोर्स बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में था, लेकिन तब फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज में एक भंगड़ा परफॉर्मेंस की थी और उसके बाद मुझे बोला गया था कि आपने एक भंगड़ा टीम बनानी है और उनको सिखाना है भंगड़ा और आपने वो परफॉर्म करना है व्हाइट कोट सेरेमनी के दिन. फिर व्हाइट कोट सेरेमनी थी. Of my patient will be my first consideration. I've been trying. हमारी फ्रेशर्स भी हुई थी थोड़े दिनों बाद. नवंबर में एडमिशन हुई, दिसंबर तक तो कॉलेज में मजे ही मजे चले हुए थे. लेकिन फिर शुरू होता है एक्चुअली जो MBBS है मतलब एक्चुअल पढ़ाई. आई रियलाइज द पोस्ट नीट इनर्शिया थिंग इज एक्चुअली रियल. लाइक फॉर इट टुक मी लाइक ऑलमोस्ट 4-5 months टू गेट ओवर पोस्ट नीट इनर्शिया. एंड फिर होती है क्लास में टेस्ट जो होते हैं. तो जैसे ही मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 days बाद ये शुरू हो गए थे. फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कभी एनाटॉमी की ग्रैंड स्टेज आ गई, कभी एनाटॉमी की सब स्टेज आ गई. तो ये टेस्ट का सिलसिला चलता रहा. अगर मैं फर्स्ट ईयर के बारे में सोचूं तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी, क्योंकि उसमें मतलब बहुत अच्छे कंसेप्ट बन जाते थे और मुझे वो पढ़ने में मजा आता था. लेकिन एनाटॉमी जिसको मैं सबसे ज्यादा पढ़ती थी वो मेरे को सबसे कम अच्छी लगती थी, क्योंकि उसको हमेशा भूल जाती थी मैं. जितनी भी पढ़ दूँ मतलब हमेशा भूल जाती. और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने बहुत कम पढ़ा है पूरे फर्स्ट ईयर में. मुझे बहुत रिग्रेट है, क्योंकि पता नहीं जब मैंने फाइनल्स और सेंटअप्स के लिए मुझे वो सारा पढ़ना पड़ा तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगा था. ऑल थ्रू द फर्स्ट ईयर फेवरेट टाइम कौन सा होता था दिन का, तो वो होता था जब DH का था. मोस्टली इट वॉज फ्रॉम 2 to 4 PM और वो मेरा फेवरेट टाइम होते थे. तो DH मेरे को अच्छा लगता था. ऐसे ग्रुप स्टडी हो जाती थी, ग्रुप स्टडी में बातें भी हो जाती थी, तो मजा आता था. और फिजियोलॉजी की बात करें तो वो मेरे को एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता था, पर मुझको उसके इतने प्रैक्टिकल अच्छे नहीं लगते थे. पहले तो उसमें जो हिमैट में ब्लड निकालना होता है वो पिक मारनी पड़ती थी अपने आप को. ह्यूमन के प्रैक्टिकल चलो ठीक ठाक थे. बाकी फर्स्ट ईयर तो मजेदार साल होता है. बीच में बहुत मजे करे हैं हम लोगों ने. तो हमारा कॉलेज का फेस्ट जो था जूनियर्स आए, हमने उनके लिए फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज की. फर्स्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट किया. फिर
हॉस्टल लाइफ तो है ही. Well, that was all about my first year, and I hope you liked my journey. There were so many things that happened during first year, but I showed only the main things. And now I'm going to make regular videos. Please consider to like and subscribe to my channel. Bye. I will see you next time.